डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक ख़त्म किया द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। आज मैं आपको सिखाऊंगी आपको पैसेज कैसे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैसेज है पेज नंबर 65 ऑफ निकालो द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड का। तो इसमें द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी, ये पैरा निकालो, फिर आपको मैं समझाती हूँ। ये जो पैरा है फॉर एग्ज़ाम्पल ये आया है यहाँ तक या यहाँ तक। तो जितना भी पैरा बड़ा हो आपको कुछ नहीं है उसके साथ, चाहे छोटा हो पैरा बड़ा हो, आपको वो बहुत बार पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पैरा आया है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25th April 2001. The conversation began routinely. I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, still Shahid was still on his feet and perfectly lucid. Except for occasional lapses of memory, I heard him thumbing through his engagement book, and then suddenly he said, "Oh dear, I can't see a thing." There was a brief pause, and then he added, "I hope this doesn't mean that I'm dying." Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. I did not know how to respond. His voice was completely at odds with the content of what he had just said, light to the point of jocularity. ये कहता है अमिता घोष कि मैंने फ़ोन पे इसके साथ बात की अपने दोस्त शाहिद आगा अली के साथ। तो मैंने उसको ये फील होने नहीं दिया कि आप किस तरह बात करते हो। मैंने पहली बार ये तज़किरा छेड़ते हुए देखा कि ही वाज ऑन डेथ बेड, तो मैंने उसको महसूस करने दिया। देखो बेटा, आपको आएगा एग्ज़ाम में पैरा, एक पैरा आए, दो पैरा आए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 2-3 बार पढ़ना है। फिर जो नीचे दिए गए होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे क्वेश्चंस होंगे चाहे वर्ड्स होंगे, जब आपको पैराग्राफ समझ में आएगा अच्छे से, आप अच्छे से कर पाओगे। फिर इसके नीचे फिर क्वेश्चंस होंगे। फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। देखो, नंबर 1 ऐसे आएगा आपको, to help somebody remember something, speaking clearly, not often, not often, react, fill in the blanks. It was on dash dash that Shahid first talked to the writer about his approaching death. He was suffering from dash dash. Though Shahid was under the treatment of cancer for last 14 months, he never talked to the writer about dash dash. In spite of his failing health, Shahid was dash dash. देखो बेटा, ए जो दिया गया है, ए fill in, find from the passage words which mean the following. ए नंबर 1 है इसका, to help somebody remember something. इसका मेन मतलब है to help somebody remember something, इसका मतलब है रिमाइंड, उसको याद दिलाना। नंबर 2, speaking clearly in a lucid manner. I think in a lucid manner, lucidly बात करना। Not often, not often, not often means रोज़ाना नहीं, occasionally, occasional, not often. रिएक्ट मीन्स किसी चीज़ का यहाँ से आंसर देना, रिस्पॉन्ड देना। ऐसे ही इट वॉज ऑन डैश डैश, इट वॉज ऑन 25th April 2001 दैट शाहिद फर्स्ट टॉक। ये आपको ज़ुबानी नहीं करना है, आपको ये पैसेज में से ही निकालना
है। आपको ये पैसेज अच्छे से देखना है, ये आप याद रखिएगा कि आपको यही पैसेज आएगा। आपको ये क्लियरली ये लेसन पढ़ना है, वर्ड मीनिंग्स पता होने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पैसेज आता है, पैसेजेस कैसे आते हैं। उनके नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो किस तरह करने होते हैं। It was on 25th April 2001 that Shahid first talked to the writer about his approaching death. Number 2. He was suffering from brain cancer. Though Shahid was under the treatment of cancer for the last 14 months, he never talked to the writer about death. In spite of his failing health, Shahid was cheerful. बहुत खुश था, अगर उसको एलिंग हेल्थ भी था। इसी तरह अगर दूसरा भी आएगा, आपको दूसरा पैसेज भी आएगा, आई मम्बल्ड समथिंग, ये यहाँ तक था जुकैलरिटी तक। फिर आई मम्बल्ड से दूसरा इन्होंने डाला है, आई मम्बल्ड से लेकर कहाँ तक, ये सारा पैरा, वायर आई लिव। ये आप पैरा पढ़ोगे, फिर इसको डिफरेंट आता है। इसके नीचे दिया गया है मैच वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। मम्बल्ड, मम्बल्ड, इनोक्यूशियस, रिवील्ड, malignant. Mumbled, spoke unclearly. Mumbled, spoke unclearly, जो बात क्लियर ना हो। Innocuous, completely harmless, ये innocence से निकला है, ये innocuous, completely harmless। Revealed, disclosed, malignant, a disease that can't be controlled, a disease that can't be controlled। इसी तरह fill in the blanks। Shahid wanted the writer to dash dash, Shahid wanted the writer to, क्या है, the Shahid wanted to write about him, Shahid wanted the writer to write about his death। शाहिद क्या चाहता था अमिताभ घोष से, राइटर से, शाहिद अमिताभ घोष से ये चाहता था कि मेरे बाद ये कुछ लिखे। वाइल शाहिद वर्कड एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, इसी दौरान शाहिद पढ़ाता था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। ही हैड ए सडन डैश डैश, ही हैड ए सडन ब्लैक आउट। आफ्टर टेस्ट्स इट वॉज फाउंड दैट शाहिद हैड ए ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। Dash Dash lived near the house of Samitha, Shahid's youngest sister, Brooklyn. Shahid decided to move to Dash Dash after his. Shahid decided to move Brooklyn. असल में शाहिद decided to move, किधर की तरफ मूव किया उसने, ब्रुकलिन की तरफ। Dash Dash lived near the house of Smitha, Shahid's youngest sister. The writer, जो अमिताभ घोष था, ये शाहिद की बहन के पास सामने रहता था, उसके मकान के सामने। The Dash Dash lived near the house of Smitha, Shahid's youngest sister. देखो बेटा, बहुत सारे पैसेजेस आएंगे, आपको ये लेसन पूरी तरह प्रिपेयर करना है। वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स समझना है कहाँ पे क्या है, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। फी अमानिल्लाह। थैंक यू वेरी मच।